Radhe Radhe to everyone. So, from today we will be starting some more questions, practice questions on higher mathematics, and as usual, we will be focusing on the concept and solving questions because mathematics is more of solving questions. By solving itself, we will be developing our concepts. So, let us start. Now this is the first question we have for the unknown. This is given to us and boundary value problem is here. Conditions are given. ठीक है. Now we have given this kernel. How to solve this question? ये हम अगर हम options की help से we will be using option तो it will be more easier for us to find. ठीक है. तो okay, let us do solve this question. So we know these options are given to us up t to x and x to t less than x and t greater than x. ठीक है. तो what is the concept that is being used out here is Leibniz rule. Leibniz rule for डिफ्रेंसिएशन. ठीक है. Leibniz रूल फॉर डिफ्रेंसिएशन. तो वही हम यहाँ पे रूल लगाएंगे. लेट मी डिफाइन इट फर्स्ट. अगर हमें हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक इंटीग्रेशन की. ये इसकी लिमिट्स है. ठीक है. ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स टी डी टी है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेशन तो वैसे ही लिख देते हैं विद ऑल द लिमिट्स. फिर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसकी. ठीक है. जो भी हमारे पास डी ऑफ एफ दिया ना, डी ऑफ एफ की हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं. ठीक है. एंड फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा अपर लिमिट होता है वो हम एफ में लिख देते हैं. ठीक है. और फिर इसी अपर लिमिट की हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं. उसके बाद माइनस साइन के साथ लोअर जो लिमिट होती है वो हम लिख देते हैं. और फिर इस लोअर लिमिट की हम डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ आवर Leibniz रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन. तो हम ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं. इसको Leibniz रूल अप्लाई करते हैं. हाँ, तो चलो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. तो इसमें अब आपका जो वाई एक्स है वो क्या है, आपका 2 टाइम्स के एक्स है. के एक्स को इन्होंने डिवाइड किया है यहाँ पे. तो हम फर्स्ट ऑप्शन कर रहे हैं. तो ये 0 से लेके x तक आएगा. पहला 0 से लेके x तक. ठीक है. तो वहाँ हमारा आ जाएगा t1 माइनस एक्स और यहाँ पे y t डी टी. ठीक है. ये वाला. उसके बाद 2 तो आ ही जाएगा. फिर x आपका जाएगा 1 तक और यहाँ पे आ जाएगा x1 माइनस टी वाई टी डी ऑफ टी. ठीक है. ये हमारा हर जगह आ जाएगा. यहाँ पे हमारा टी स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर, ये सब चीज़ें आ जाएगी. ठीक है. लेकिन हमारा इक्वेशन जो है वो इसी तरीके से बने. नाउ अब Leibniz लगा देते हैं. तो यहाँ पे 2 आ गया. यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस आ जाएगा. 0 से x आ जाएगा माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी प्लस. अब हम x की जगह जो है t की जगह जो x पुट करेंगे. तो x1 माइनस एक्स वाई ऑफ x और dx अपॉन dx करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा. अब माइनस हम क्या t की जगह 0 पुट करेंगे तो वो तो 0 ही आ जाएगी पूरी इक्वेशन. फिर नेक्स्ट की करते हैं. ये 2 आ जाएगा. ये x से 1
तो यहाँ पे 1 माइनस टी वाई टी डी टी, ठीक है। उसके बाद टी की जगह हम x पुट कर नहीं 1 पुट करते हैं पहले, तो 1 की जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना अपर लिमिट की तो 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 ही हो गया। माइनस करेंगे तो ये x इंटू 1 माइनस एक्स वाई ऑफ x, ठीक है, ये बन जाएगा। हाँ, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमने यहाँ पे y डैश y था ना, y डैश हो गया ना क्योंकि यहाँ y था, हमने डिफ्रेंशिएशन तो दो बोथ साइड्स करते हैं ना। अब हम देख रहे हैं कि क्या क्या हमारे पास कट हो गया। तो देखो ये चीज़ कट हो गई और ये चीज़ हमारे पास कट हो गई है ना, ये चीज़ हमारे पास कट हो गई है। अब हमारे पास सिर्फ ये बचा है, तो जो कट हो गया उसको हम रब कर देते हैं। ये चीज़ ही बची है हमारे पास है ना, इसमें हम प्लस साइन। अब इसको फिर से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसकी फिर से इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई x की टर्म ही नहीं है, तो ये 0 हो गया। फिर माइनस 2 के साथ x डाल दो, ये आ जाएगा 0 पे, तो 0 हो जाएगा। फिर अगली जो टर्म है वो भी 0 हो जाएगी क्योंकि वहाँ x की कोई टर्म ही नहीं है। फिर से हम 1 पे 0 हो जाएगा, वैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x पे आपका 2 आ जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा और y ऑफ x आ जाएगा, है ना। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब ये हमारा 2 माइनस एक्स है ना, तो ये वाली चीज़ कब कट जाएगी, जब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, वो भी कट जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये साथ में लिख रहे हो, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट राइटिंग इट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैथ्स इज़ मोर ऑफ राइटिंग एंड सॉल्विंग। जस्ट बाय लुकिंग आउट यू कैन नॉट बी सीइंग कि हाँ भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे -2y(x), ठीक है। तो y डबल डैश प्लस 2y(x), तो आप ये देखो यही चीज़ है, आपने ऑप्शन 1 ही लिया एंड जस्ट सी कि 1 को ही सॉल्व करके आपकी लेबनीज से जस्ट आपने लेबनीज ट्राई किया और कुछ नहीं ट्राई किया एंड यू हैव गॉट द आंसर। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। स्टिल हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क वेरी इजीली। एक मिनट ना, इट्स जस्ट हैंग्ड आउट, प्लीज वेट, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। हाँ, तो कंसिडर आर विद यूजुअल टोपोलॉजी एंड वी हैव टू फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास, तो हम ऑप्शन वाइज ही चलते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन है अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग 33 एलिमेंट्स हैज़ एटलीस्ट 3 डिफरेंट हॉस्टॉर्फ टोपोलॉजीज। अब हमें पता है एनी हॉस्टॉर्फ टोपोलॉजी on a finite set is discrete, ठीक है। तो अगर ये डिस्क्रीट है तो इट कैन नॉट हैव 3 टोपोलॉजीज, है ना, ये हो नहीं सकता। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ सेकेंड इज सेइंग दैट let X be a non-empty finite set with the Hausdorff topology. Consider X into X with the product topology. Then every function this is continuous. Okay.
नाउ सिंस x जो है हमारा फाइनाइट है, इट इज़ अ फाइनाइट एंड हॉस्टॉफ, ठीक है, x को जो हम बोल रहे हैं ये हमारा फाइनाइट भी है एंड हॉस्टॉफ भी है, ठीक है। तो जो हमारा अगर ये फाइनाइट है तो x क्रॉस x भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा एंड हॉस्टॉफ हो जाएगा, ठीक है। तो x क्रॉस x अगर फाइनाइट भी है हॉस्टॉफ भी है तो ये भी क्या होगा, डिस्क्रीट, है ना, डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो जाएगी इसकी भी। तो एवरी, तो इसका मतलब अगर डिस्क्रीट हो गया तो एवरी फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, x be a discrete topological space having infinitely many elements, let r to x be a continuous function and f or g be any non-constant function, then range of g of f of contains at least 2 elements. Now we have given f that is discrete and continuous as well. So f is obviously constant map and g of f as when it is constant means let me erase this first. Now they are saying this, they are discrete, like this one f is discrete and continuous as well, and this is also non-constant function. So g of f, so there must be some constant map that is projecting constant map. So this constant map must have one element, but they are saying two, so this is not at all correct, this is false. Now next one is, if a non-empty, let me erase this again, if a non-empty metric space X has a finite dense subset, then there exists a discontinuous function x to r. So let us take that A is finite and dense, so its closure be x. Now A is finite set in a metric space, A is closed, that's why this, because A is closed. Now A is closed, A is equals to x, so x is finite metric space, and topology on x is discrete, so f to s is continuous, it is saying discontinuous, which is very much incorrect. So this is also false statement, only we have second option which is correct, because it is non-empty metric space ना, finite dense भी है, so it must be continuous, not discontinuous. Just because of this statement is false. Okay, now next question we have, now this L be a positive integer and we have to find the dimension of the R vector space of all polynomials in one variable over R having a total degree of at most this. Okay, now one line formula which is being used for this is dimension of the vector space of polynomial f of m variable
m variable having degree at most n. At most n is m plus n this. ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल f of m वेरिएबल हैविंग डिग्री ऑफ एट मोस्ट n is its m plus n cm. So here what is given to us? Number of variables of polynomial is 2. Number of variables of polynomial is 2. Degree is at most L, so it will be L plus 2 and C 2. So this will be L plus 2 factorial and it is L factorial. So on solving it will be L plus 2 L plus 1 upon 2. So this one is matching with this. Okay. Now we have to find the number of solution of the equation x square equals to 1, and we have given ring. We can write like this. Now u of z105 is isomorphic to u3 cross u5 and u7. It's just the factorization of this. Now this will be z2 z4 and z6. Now we have given that x square equals to 1, so order of x divides 2, hence order of x can be 1 or 2. It can be 1, it can be 2. Now first elements of z2 of order 1 and 2 is 2. Now elements of z4 of order 1 and 2 is this. Elements of z6 of order 1 and 2 is this. So in total elements will be 2 cross 2 cross 2, so it will be 8. This is matching with our this option. Now we have to find the coefficient of variations using the extremal, and consider the variational problem. We have given this and just find which is matching as per this. So first of all, let me write the Euler-Langerhans equation. So Euler-Langerhans equation for this will be del f del y minus dy dx is del f del y dash. This is 0. Now extremal is given to us. This is the given equation. Now first case is if it is greater than y equals to 0, then we can write x y dash
is equals to y square y dash, and it will be plus x y. So using this formula we will be having minus 2y y dash plus x minus d over d of x. It will be 2y dash minus this, and it's equal to 0. Okay. Now it will be minus 2y y dash plus x 2y double dash minus 2y y dash equals to 0. Now on solving this, we will be having, this will be plus sign है ना, this तो हमारा y double dash is coming x upon 2. ठीक है, so x upon 2 I will be writing out here y double dash equals to x by 2. Okay, now taking the second case when y is less than 0. This one is when y is greater than 0. When y is less than 0, in that case we will be having y dash square plus y square y dash plus x into y. So again using Euler Lagrange equation, it will be 2y y dash plus x minus d of dx. This will be 2y dash plus this. This is 0. Then y dash plus x minus 2y double dash and minus 2y y dash. Again this will be cutting out, so in both cases we are getting the same thing. Y dash is equals to x by 2. So on integrating this we can find the equation. Double integration we have to do to find the y. So y dash x square upon 4 plus a, and then y x cube 12 plus ax plus b. Using the conditions, b will be 0, and using this it will be 0. So a is minus 1 by 12 है ना, तो a will be minus 1 by 12. x तो था ही ऑलरेडी यहाँ पे. So बस this is the. Now s has no, नहीं, option a is false, only नहीं, 0 तो नहीं आ रहा है. यूनिक स्टेशनरी फंक्शन है, y नॉट आइडेंटिकली 0. c है, इनफाइनाइट भी नहीं आ रहा, तो c ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट. I hope it's understandable to you. Thank you so much.